Okay, students, today we are going to start our classification about the periodic classification of elements. As you know, it is one of the most important chapters of your class 10th chemistry, as well as one of the most important chapter which is going to lay down the foundation of your chemistry knowledge. All right. So let me begin with the discussion of this chapter. You know, till date, we are having approximately 118 elements known. Okay, and still the discovery of new elements is going on. Hopefully, within 1 year or the two, we'll get the atomic number 119 as well as 120. All right, but this is not the matter today we have to discuss. So all the elements have been divided into few groups in such a way that the elements in the same group have similar properties. हमने एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया है ग्रुप्स और पीरियड्स में, और इस तरह से दैट द एलिमेंट्स फॉलोइंग इन द दैट एलिमेंट्स लाइंग इन वन ग्रुप आर having same chemical properties and physical properties, or I must say similar. Okay, there is a difference between same and similar. Same means 100% identical, similar means milta julta. So milta julta property hai, right? And the first and the earliest attempt to make the classification of elements was done by Drobe-Renner, who classified the students into the groups of 3, right? And these were called Drobe-Renner triads. What was the Drobe-Renner's law? Drobe-Renner said, according to Drobe-Renner's law of triads, you know, when elements are arranged in the order of increasing atomic masses, groups of 3 elements, that is known as triad, having similar chemical properties are obtained. The atomic mass of the middle element of the triad being equal to the arithmetic mean of the atomic masses of other 2 elements. What does it mean? See, इन्होंने बोला कि अगर आप इन एटम्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस में अरेंज करें, राइट, then you will get the groups of 3 elements that is known as triad, which will have similar chemical properties. And suppose you are having 3 elements A, B and C in a sequence, then the mean of the masses of A and B, mean कैसे निकाल, A and C, extreme 2, right, mass of A plus mass of B, C upon 2, right, will be equal to the mass of B. Understanding what I'm saying? So let's see, इन्होंने सिर्फ 3 ट्रायड दिए थे. The first was alkali metal group. Alkali metal group was lithium, sodium and potassium. Let me show you the triad. Yeah, see, lithium having mass number 7, potassium having mass number 39. Take the mean of these two, 39 plus 7, 43, 46 upon 2, that is 23, the mass of sodium, right? So the mean of the mass of the extreme 2 or the terminals 2 will give you the mass of the middle element, right? This was the Drobe-Renner's law of triad. कब मिलेगा? जब हम increasing order में atomic masses के increasing order में arrange करते हैं. But the problem with the bigger drawback of Drobe-Renner's triad was that he was not able to classify all the elements, all the then known elements in the form of triads. उस समय जितने elements लोगों को पता थे, scientists को पता थे, उन सारे एलिमेंट्स को ट्रायड्स के फॉर्म में क्लासिफाई नहीं कर पाए थे. मगर ऐसा करने से, ऐसा ना हो पाने से इनका कंट्रीब्यूशन कम नहीं हो जाता, क्योंकि ये पहले थे जिन्होंने सोचा कि हम एलिमेंट्स को क्लासिफाई भी कर सकते हैं. ऑलराइट, इतना बात समझ में आया? लेट्स मूव फॉरवर्ड. Another triad was calcium, strontium and barium, that is alkaline earth metal triad. In this we are having calcium, strontium and barium. Calcium with the mass number 40, barium with the mass number 137, and when you will take the mean of these two, you will get the 40 plus 137 upon 2 is equal to 88.5, which is more or less equal to the mass of strontium. Any problem? All right. Another triad given by Drobe-Renner was halogen group. Okay, the halogens triad, chlorine, bromine and iodine. You can see the mass of chlorine is 35.5, iodine 127 and bromine is 80, right? So just see, 35.5 plus 127 upon 2 is equal to 81.2, which is more or less equal to 80, right? So in this way, Drobe-Renner triads we are finishing, right? I have already told you the drawback, the limitation, that it was failed to arrange all the then known elements in the form of triads. Yes, so the limitation of the Drobe-Renner classification was that
it failed to arrange all the then known elements in the form of triads. Understood? Droberner could identify only 3 triads, which we already have discussed. Now, another very interesting law, the Newland's law of octaves, right? He was having some love for music and he saw music in the chemistry as well. Okay. So according to Newland's law of octave, you know, sa, re, ga, ma, pa, dha, ni and sa. So sa se start kiya and after 7 elements we are again getting the 7th note, 8th note of the octave music repeating. Okay. So in the very similar way, जैसे इन्होंने बोला जैसे ऑक्टेव म्यूजिक में 8th नोट पहले नोट जैसा होता है, सा रे गा मा पा धा नी एंड अगेन सा. ओके, सो सा टू सा सिमिलर. अंडरस्टैंडिंग? इन द वेरी सिमिलर वे अगर हम एटम्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस में अरेंज करें तो वी विल गेट द 8th एलिमेंट repeated with the repeating property of the first element, right? Let's see. So what was the Newland's law of octave? First of all, note it down because it can be asked as it is in your examination. When the elements are arranged in the order of increasing atomic masses, the properties of the 8th element are the repetition of the properties of first element. Understood? You can see here, beginning with hydrogen, lithium. Why after hydrogen I am saying lithium? Because at that time noble gases were not known. So hydrogen, then lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine, neon, again missing, sodium, C. Starting sa, re, ga, ma, pa, dha, ni and again sa. Alright. So 8th element is repeating the properties. आप कहीं से भी start कर सकते हैं. You can start with the boron, you will get the aluminium as the 8th element. Alright. Fine. You can start with the fluorine. You will get the chlorine as the 8th element. Any problem? Yes. So this was all about law of octaves, and the drawback of law of octave was that he was able to classify the elements, or his law was applicable only up to the atomic number. Up to which atomic number? Up to atomic number 20. Got it? That is up to calcium. Let's see. These are the drawbacks. Newland's law of octave was applicable to the classification of elements up to calcium only. First point to be noted. After calcium, her 8th element was not having the properties of the first element. Newland assumed, बहुत बड़ा mistake. उस समय 56 elements हम लोग जानते थे. Newland को लगा अब और तो discover नहीं होंगे. Got it? So he assumed that there are 56 elements known today and no more element will be discovered in future. All right. This was a bigger mistake done by Newland. In order to fit the elements into this table, Newland put even 2 elements together. आप अगर इनका टेबल देखें तो एलिमेंट्स को फिट करने के चक्कर में अपनी टेबल में इन्होंने दो एलिमेंट्स एक ही जगह रख दिए थे. फॉर एग्जांपल कोबाल्ट एंड निकल, सीरियम एंड लैंथानम. ओके, right? In order to fit the elements in his periodic table, he put 2 elements together in one slot only. And last drawback, iron and cobalt, which are having iron and nickel and cobalt, which are having very similar properties, were placed far apart, right? Far apart. Let's see where they are placed. See, this is iron and this is cobalt and nickel. Understood? Any problem? Clear? So iron is having very similar properties with cobalt and nickel, but still it is placed far apart. और जबकि हमें पीरियोडिक क्लासिफिकेशन करने का जो मेन पर्पस था, सोल पर्पस था, वो ये था कि हम सिमिलर प्रॉपर्टीज वालों को एक ग्रुप में रख पाए, राइट? सो दिस वाज फेल्ड, बट स्टिल न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव के बाद ये श्योर हो गए थे सारे साइंटिस्ट
कि कोई तो ऐसा प्रॉपर्टी है जिसके हेल्प से हम पीरियोडिक, जो कि इनका पीरियोडिक फंक्शन है एलिमेंट्स का, और जिसकी हेल्प से हम पीरियोडिक क्लासिफिकेशन कर सकते हैं. अंडरस्टूड? नेक्स्ट इज द most famous name known as father of periodic table. Okay, although in chemistry we avoid this father and mother concept, but yet he is known as a father of periodic table, that is Mendeleev. Let's discuss about the Mendeleev. But before I move to Mendeleev, I would like to tell you something about the periodic table. What is periodic table? Okay, see, पीरियोडिक टेबल टर्म का क्लासिफिकेशन कर लेते हैं. द पीरियोडिक टेबल इज द चार्ट ऑफ एलिमेंट्स प्रिपेयर्ड इन सच अ वे दैट द एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज occur in same vertical column, and these vertical columns are called group. Any problem? Right? Then a periodic table consists of horizontal rows of elements, that is periods, and vertical columns of elements are called groups. Periodic table में जितने आपके horizontal rows हैं, these are called periods, and vertical columns are called groups. Understood? So horizontal rows, how many horizontal rows were there in Mendeleev's periodic table? 7. 7 periods and 8 groups. All right, in Mendeleev's periodic table. And at the time of Mendeleev, 63 elements were known. Mendeleev के टाइम पे कितने elements known थे? 63. Fine. Elements having similar chemical properties form the oxides of similar chemical formula. Obviously बात है, जब similar chemical and physical properties हैं तो उनके formulas of oxide and hydride similar होंगे, right? ऊपर ऑक्साइड्स के लिए बोला गया, ये देख सकते हैं आप, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम सिमिलर प्रॉपर्टी वाले हैं, तो Li2O, Na2O, K2O, इसके नीचे आपको रुबिडियम मिल जाएगा, Rb2O, सीजियम मिल जाएगा, CS2O, राइट? अंडरस्टूड? सो अगर आप सेम ग्रुप के एलिमेंट देख रहे हैं, राइट, तो दे मस्ट हैव द फॉर्मूला ऑफ देयर ऑक्साइड्स एंड हाइड्राइड्स सिमिलर. So now let's move to the Mendeleev's periodic law and Mendeleev's periodic table. Students, when we are going to discuss about the Mendeleev's periodic law, so Mendeleev ने भी फर्दर यही मिस्टेक किया था कि उन्होंने एटॉमिक मास को पीरियोडिक फंक्शन बताया था, राइट? और इसकी वजह से कुछ फ्लॉज, कुछ ड्रॉबैक्स मिलेंगे Mendeleev के. देखते हैं. According to Mendeleev's periodic law, when the elements are arranged in the order of increasing atomic masses, the element with similar chemical property occur at regular intervals. All right. The properties of elements are a periodic function of their atomic masses. Understood? क्या law है? The periodic properties of elements or the properties of elements are the periodic function of their increasing atomic masses. Please focus on this. आगे जो modern periodic law आएगा, same law है, सिर्फ atomic mass की जगह पर हम atomic number कर देंगे. Okay? And that was given by Henry Moseley. We'll discuss it, but for time being, keep in mind that Mendeleev's periodic law was the properties of the elements are the periodic function of their increasing atomic masses. In his periodic table, there were 7 periods and 8 groups. I have already told you. And now let's see his periodic table. See, this was the periodic table given by Mendeleev. Group 1, Group 2, Group 3, Group 4, Group 5, 6, and 7, right? At the time of Mendeleev also, we were not knowing the noble gases. Clear? These are the periods. And at the top of each group, he has given the formula of oxide, general formula for oxide and hydride. Suppose इन्होंने general formula R2O दिया है, तो इसका मतलब H के साथ जब ऑक्सीजन कंबाइन होगा तो H2O, Li2O, Na2O, K2O, Cu2O, Rb2O, Ag2O, CS2O, Au2O, etc. इन सब के ऑक्साइड का फॉर्मूला ऐसा ही रहेगा. और हाइड्राइड RH means H and H, that is H2, LiH, NaH, KH, CuH, RbH, AgH, CSH and CuH, AuH. Understood? So इसी तरीके से at the top of each and every group he has given the formula of their oxide and hydride which was applicable to all, right?
ये इनका प्रॉपर्टी है और मेरिट में आ जाएगा. नाउ लेट्स सी मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ. और मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल. द फर्स्ट मेरिट मींस होता है बेटा बेनिफिट्स, फायदे. ओके, सो मेंडलीव पीरियोडिक, अच्छा मेंडलीव का ये अजम्पशन बहुत बढ़िया था कि मेंडलीव के टाइम पर 63 एलिमेंट्स नोन थे और इन्होंने न्यूलैंड वाला मिस्टेक नहीं किया. न्यूलैंड वाज सेइंग दैट ओनली 56 एलिमेंट्स आर देयर एंड नाउ नो मोर एलिमेंट विल बी डिस्कवर्ड. मेंडलीव सेड यस, today we are knowing 63 elements, in future more elements will be discovered. Okay, and even when he has not got a proper place for any particular element, he left the empty space in his periodic table. इन्होंने फ्री स्पेस छोड़ दिया था अपनी periodic table में और उन एलिमेंट्स का नाम और उनकी प्रॉपर्टीज भी प्रिडिक्ट कर दी थी कि भविष्य में एक ऐसा एलिमेंट आएगा जिसकी प्रॉपर्टी इस तरीके की होंगी, राइट, और वो उस periodic table में सेट हो जाएगा. और जब ऐसा हुआ तो इट वाज अ शॉक फॉर द साइंटिस्ट ऑफ दैट टाइम, राइट, कि ऐसे कैसे हो सकता है, मतलब साइंटिस्ट कम एस्ट्रोलॉजर, राइट. सो लेट्स सी, यहां पर जब कैल्शियम के आगे बढ़ते हैं तो कोई ऐसा एलिमेंट नहीं मिल रहा था जिसकी प्रॉपर्टी बोरॉन से मैच कर रही हो, राइट. बोरॉन के नीचे आ रहा है ना ये, तो बोरॉन से मैच करने वाली प्रॉपर्टी का एलिमेंट नहीं मिल रहा था. मेंडलीव लेफ्ट द एम्प्टी स्पेस एंड सेड दैट द नेम ऑफ दिस एलिमेंट इज एका बोरॉन. एका बोरॉन मींस आफ्टर बोरॉन, ऑलराइट. और इसकी प्रॉपर्टी कैसी होंगी, बोरॉन जैसी होंगी, थोड़ी बहुत वाइट्रियम जैसी होंगी जो उसके नीचे आ रहा है, राइट. तो ये बहुत आसान हो गया. फॉर एग्जाम्पल आपको सपोज आपका घर का नाम चिंटू है और स्कूल में आपका नाम सूर्य प्रकाश है, राइट. सो आपका कोई रिलेटिव आता है जिसको सूर्य प्रकाश नहीं पता है और वो और क्लास भी नहीं पता उसको आपका. फिर वो आपके वॉचमैन से आकर के बोलता है कि सर प्लीज मुझे चिंटू को बुला दीजिए, मुझे मिलना है, राइट. तो इट विल बी अ वेरी डिफिकल्ट टास्क फॉर योर वॉचमैन टू फाइंड आउट चिंटू आउट ऑफ 150 और 2000 स्टूडेंट्स, राइट. Understanding what I'm saying? But if he is telling that the name is this and he is having properties equivalent to class 10th student, that is he is a class 10th student, so it will be a very means quite easy task for the watchman to find out you. तो ऐसा ही कुछ हो गया दूसरे साइंटिस्ट के लिए जिनको पता चल गया कि अच्छा कोई एक एलिमेंट है जिसका नाम एका बोरॉन है, जिसकी प्रॉपर्टीज बोरॉन और वाइट्रियम जैसी हैं. तो डिस्कवरी ऑफ दीज एलिमेंट्स बिकम वेरी इजियर. ओके, दिस वाज अ पॉजिटिव मेरिट. इसी तरीके से एल्युमिनियम के बाद वाले के लिए भी इनको नहीं मिला जिंक के आगे का एटॉमिक मास, तो उन्होंने उसका नाम रख दिया एका एल्युमिनियम. सिलिकॉन के नीचे भी नहीं मिला, उसका नाम रख दिया एका सिलिकॉन, राइट. आज की पीरियोडिक टेबल में एका बोरॉन का प्लेस लिया है स्कैंडियम ने, SC स्कैंडियम. एल्युमिनियम, एका एल्युमिनियम का स्पेस लिया है गैलियम ने, Ga. एंड एका सिलिकॉन का प्लेस लिया है जर्मेनियम ने, Ge. एनी प्रॉब्लम? ओके, सो दीज वर द एका बोरॉन, एका एल्युमिनियम एंड एका सिलिकॉन. लेट्स सी अनदर मेरिट ऑफ द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल. Second periodic merit was Mendeleev's periodic table could predict the properties of several elements on the basis of their position in the periodic table. किस पोजीशन पे एलिमेंट है उसके बेसिस पे हम उसकी periodic properties means guess कर सकते थे, predict कर सकते थे. All right. And the next merit is Mendeleev's periodic table could accommodate noble gases when they were discovered. आसानी से मेंडलीव ने नोबल गैसेस को जब नोबल गैसेस डिस्कवर हुई तो उनको प्लेस कर दिया एर्थ ग्रुप के बगल में और बिना कोई भी फ्लक्चुएशन हुए इन द पीरियोडिक टेबल, राइट. सो इट वाज आल्सो अ गुड पॉइंट फॉर मेंडलीव. और जो ड्रॉबैक्स है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के, उनमें फर्स्ट पोजीशन है पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स वाज नॉट एक्सप्लेन्ड. व्हाट आर आइसोटोप्स स्टूडेंट? फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट नो. सो आइसोटोप्स आर द एलिमेंट्स or the atoms of the element having same atomic number but different mass number. For example, hydrogen के 3 isotopes है, 1H1, 1H2 and 1H3. That is protium, deuterium and tritium. 1H1, 1H2 and 1H3.
3, करेक्ट. ऑल 3 आर हाइड्रोजन और तीनों के मासेस अलग अलग हैं. एटॉमिक नंबर सेम है 111 बट मास नंबर्स आर डिफरेंट 1, 2 एंड 3. तो क्योंकि मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में हम इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में अरेंज कर रहे हैं तो देयर मस्ट बी 3 डिफरेंट पोजीशन फॉर हाइड्रोजन. ओके, जबकि ऐसा नहीं था. तो मेंडलीव अपने इस पॉइंट को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे. द सेम वाज द केस विद क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37 कि भाई दोनों को अलग अलग रखिए. तो मेंडलीव बोले ना, हम तो एक ही पोजीशन पर रखेंगे. राइट? क्यों अलग अलग रखेंगे? तो पीरियोडिक टेबल खराब हो रहा है. ओके, प्रॉपर्टीज मैच नहीं कर रही हैं. अंडरस्टूड? दिस वाज द प्रॉब्लम. सो पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स कुड नॉट बी एक्सप्लेन्ड. Second topic, second means limitation was wrong order of atomic masses on the same elements could not be explained. मेंडलीव ने क्या किया, जब इन्होंने देखा कि सेम प्रॉपर्टी वाला एलिमेंट आगे जा रहा है, बिकॉज एटॉमिक मास में हमें फ्लक्चुएशन देखने को मिल सकता है थोड़ा बहुत, राइट? तो उन्होंने ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास खुद ही गलत कर दिया प्रॉपर्टी सही रखने के लिए. ओके, तो यू कैन सी the example of what nickel and just wait a minute, let me show you the Mendeleev's periodic table so that you can easily understand. See, this is your cobalt with mass number 58.9, nickel 58.7. so if we are means putting them in the increasing masses, increasing atomic masses, तो उसके अकॉर्डिंग निकल पहले होना चाहिए और कोबाल्ट बाद में. बट सिमिलर प्रॉपर्टी वाले नीचे क्या हो रहा था, रोडियम के साथ प्रॉपर्टी मैच कर रही थी निकल कोबाल्ट की और पैलाडियम के साथ मैच कर रही थी निकल की. ऑलराइट, सो प्रॉपर्टीज सेम रखने के लिए, सेम प्रॉपर्टी वाले सेम वर्टिकल कॉलम में रखने के लिए मेंडलीव ने अपना ही बनाया हुआ लॉ कि हम इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में अरेंज करेंगे, उसको अल्टर कर दिया. राइट, बात समझ में आ रही है? दिस वाज अनदर ड्रॉबैक बाय मेंडलीव. एंड द थर्ड ड्रॉबैक वाज पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन. हाइड्रोजन को करेक्ट पोजीशन नहीं मिल पाई. राइट? पता है क्यों? बिकॉज हाइड्रोजन कभी अल्कली मेटल्स की प्रॉपर्टी शो करता है और कभी हैलोजेंस की प्रॉपर्टी शो करता है. तो इससे हमें एक और चीज सीखने को मिलती है कि जब भी आप दो डिफरेंट चीजों की तरफ एक साथ चलेंगे तो आपको हाइड्रोजन डिक्लेयर कर दिया जाएगा, राइट? एंड यू विल नॉट गेट एनी पर्टिकुलर पोजीशन, एनी फिक्स्ड पोजीशन. ऑलराइट, सो दिस वाज द थर्ड ड्रॉबैक. अ करेक्ट पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन कुड नॉट बी असाइन्ड इन दिस पीरियोडिक टेबल. अनदर प्रॉपर्टी, I think this is all about the discussion of Mendeleev. Now we are going to start the present basis for the classification, one of the most important things and what actually we have to study, with which we are concerned to. Okay, because अभी तक आप हिस्ट्री पढ़ रहे थे, now let's start chemistry. Okay, so the present basis of the classification of elements is your atomic number, right? So the significance of atomic number in the classification of element is that being equal to the number of electrons in an atom. क्यों? क्योंकि एटॉमिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल हो जाता है कब? जब एटम न्यूट्रल स्टेट में है. तो जनरली हम लोग क्लासिफिकेशन में न्यूट्रल स्टेट में ही रखते हैं, राइट? इलेक्ट्रॉन सेम है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है, एंड यू ऑल नो दैट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज द रूट कॉज ऑफ सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज इन अ ग्रुप, राइट? सो सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज, that's why the most important thing, and this is why Henry Moseley suggested that we can have atomic number as the basis of classification of elements. Understood? So what is your modern periodic law? According to modern periodic law, the elements, the properties of the elements are the periodic function of their increasing atomic numbers. All right, fine, let's move forward. Yes, so this was about the modern periodic law and modern periodic classification. Explanation of anomalies of the Mendeleev's classification of element. अब मेंडलीव के क्लासिफिकेशन में जो एनोमलीज थी, जो ड्रॉबैक थे, उनमें हाइड्रोजन की पोजीशन वाला ड्रॉबैक अभी भी कंटिन्यू रहेगा.
बाकी हर ड्रॉबैक का एक्सप्लेनेशन दे दिया मॉडर्न पीरियोडिक लॉ ने, राइट। लेट्स सी कैसे। There was a drawback that position of isotopes is not explained, right? याद है आप लोगों को? So position of isotope का प्रॉब्लम ही इसलिए आ रहा था क्योंकि उनके अलग अलग मास थे, और अब तो एटॉमिक नंबर सेम था, और अब तो हमने क्लासिफिकेशन का बेसिस ही एटॉमिक नंबर कर दिया है। व्हाट विल हैपन, सारे एक ही पोजीशन पर आ जाएंगे, राइट। एक्सप्लेन हो गया। सेकंड, एक्सप्लेनेशन ऑफ पोजीशन ऑफ निकल एंड कोबाल्ट। वहां पर कोबाल्ट और निकल में प्रॉब्लम था, राइट। जैसे ही आप एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग अरेंज करेंगे, ये पोजीशन अपने आप ठीक हो जाएगा। निकल पहले आ जाएगा और कोबाल्ट पहले आ जाएगा और निकल बाद में पहुंच जाएगा। क्लियर। नाउ मॉडर्न पीरियोडिक लॉ एक बार फिर से आप लोग देख लीजिए। द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। प्लीज इसको बोल लीजिए 4-5 बार जो है अपने आप में, और लिख लीजिए इसको, राइट। इट शुड बी इन योर ब्रेन। द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। मतलब हम एलिमेंट्स को बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर के क्रम में अरेंज करें तो एक रेगुलर इंटरवल के बाद, अभी हम सारे गामा नहीं कर रहे हैं कि 8 के बाद, ओके, एक रेगुलर इंटरवल के बाद सिमिलर प्रॉपर्टी वाले रिपीट होंगे। नाउ लेट मी शो यू द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। अच्छा, एक्सप्लेनेशन ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक लॉ बेटा मैं पहले आपको बता चुका हूं। सेम ग्रुप में सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाले आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, लिथियम 2-1, इनका 2-8-1, सोडियम। तो आउटर मोस्ट शेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ही आपकी केमिकल प्रॉपर्टी डिसाइड करते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मींस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल। सो आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन इसमें भी है, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें भी है, तो बोथ आर हैविंग वैलेंसी 1, both will have same formula for the oxide and hydroxide hydrides, and अदर कंपाउंड्स का भी उनका फॉर्मूला भी सिमिलर हो जाएगा। उनका वैलेंसी सिमिलर है, उनकी केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर हो जाएंगी। सिमिलर बोल रहा हूं मैं, आइडेंटिकल नहीं बोल रहा हूं, दोनों चीजों में डिफरेंस है, ओके। आप लोगों ने कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलैरिटी पढ़ी है? द सेम डिफरेंसेस। कॉन्ग्रुएंसी मतलब सेम होना और सिमिलैरिटी मतलब सिमिलर होना। Yeah. So the next thing is the real signification of the modern periodic classification is based on the atomic number. That is that it relates the periodicity of properties of elements to the periodicity of their electronic configuration. Right? यहाँ पर हमें cause of repetition of the property भी पता चल रहा है कि आखिर repeat क्यों कर रही है property. Long form of periodic table लोग कहते हैं कि बोर ने दिया था, बट एक्चुअल में कई लोगों का कंट्रीब्यूशन था, ठीक है। इस बुक में बोर का नाम लिखा हुआ है। लेट मी शो यू द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। दिस बेटा, इन योर लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल देयर आर 7 periods, as you can see, 7 periods, that is 7 horizontal columns. Okay, and 18 groups, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 and 18. All right, fine. So just have a look of this periodic table, then we will continue our discussion. Fine. So I hope all of you have paused the video and seen this periodic table deeply. Now let's move on. You can observe in the first period there are 2 elements only. This is called a very short period. Then periods 2 and period 3 have 8 elements. We call them short periods. Then 6th and 7th, sorry, 5th and 4th and 5th are having 18 elements. We call them long periods. 6th and 7th have 32 elements and we call them long, very long periods. The problem is जब ये बुक प्रिंट हुआ था उस समय 118 तक के एलिमेंट्स डिस्कवर नहीं हुए थे, इस वजह से ऊपर भी इन्होंने 115 लिखा है और 7th में इन्होंने लिखा है इट इज स्टिल इनकम्प्लीट, बट आज वो कंप्लीट हो चुका है। तो अगर आप लिखेंगे तो कंप्लीट लिखेंगे, ठीक है, अभी कंप्लीट हो चुका है। The number of elements in a period is fixed by the maximum number of electrons which can be accommodated in the various shells of an atom. Okay, any problem? ये आपने बोर का क्लासिफिकेशन पढ़ा था। अगर आप ये डिफरेंस देखें 2
then 8, then 18, then 32. तो ये बोर का क्लासिफिकेशन वाला नंबर है 2n स्क्वायर के अकॉर्डिंग. 2n स्क्वायर 2 into 1 स्क्वायर 2, 2 स्क्वायर 8, 3 स्क्वायर 18, 4 square 32, 5 square 50, so on and so forth, right? Yes. Vertical columns 1 to 18, I have already told you. See, these elements of groups 1, 2 and 13 to 17 are called normal elements. The elements of group 18 are called noble gases, okay? And the elements from 3 to 12 are called transition elements. And let me show you in the periodic table only, that you will be able to understand in a better way. These beta group 1 and 2 and 13 to 17 are called normal elements, because ये normal आपके metals and non metals हैं, इधर भी normal elements, okay? Group 3 to 12, these are called transition metals or transition elements, okay? Heavy metals भी बोलते हैं इनको. ये जो आपका group 18 है, these are called noble gases. नोबल गैसेस. और ये जो लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड सीरीज मैंने बोला है, ये क्योंकि आपने अगर नोटिस किया हो तो ये ट्रांजिशन के अंदर ही तो है. 57 to 71, 89 to 103, ये भी ट्रांजिशन के अंदर है. दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स. ठीक है, अभी के क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग इनके ये नाम्स हैं. और अगर मैं क्लासिफाई करूं एक नया तरीका, तो ये ग्रुप बेटा जो पीरियड 1 है, ग्रुप 1, दिस इज कॉल्ड एल्कलाइन एल्कली मेटल्स. Alkali metals. Group 2 alkaline earth metals. Group 3 boron family, carbon family, nitrogen family, इनके दूसरे नेम्स भी हैं. इसको आप ऑक्सीजन फैमिली या चैल्कोजेंस बोल सकते हैं. फ्लोरीन फैमिली या फिर हेलोजेंस बोलते हैं. हेलोजेंस क्योंकि ये सॉल्ट बनाने में हेल्प करते हैं. एंड नोबल गैसेस आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. सो दिस इज ऑल अबाउट देयर नेम्स. Position of hydrogen is still a dispute. Why? Because it is showing the properties of group 1 as well as group 17. ठीक है, तो कुछ लोग कहते हैं कि दोनों जगह रख दीजिए, कुछ लोग कहते हैं इनको निकाल के बाहर रख दीजिए. जैसे इसमें देखिए अलग रखे हुए हैं. ठीक है, आ रही बात समझ में? कुछ लोगों का मतलब साइंटिस्ट, ओके, लोकतंत्र नहीं है कि जिससे सबसे वोटिंग कराई जा रही है. ऑलराइट. So I would suggest you people to take the screenshot of these questions if you are not having a question book in soft copy or hard copy with you, and go through these all questions. If you will solve all these questions plus NCERT exemplar, NCERT in-text questions, then take it from my side, you will not be in a problem while solving the question of board question paper of the same chapter, okay? Because this is more than enough what you have to do. And it's my suggestion to all students that please make at least 100 MCQs or short answer type questions, assertion reason type questions on yourself from each and every chapter of your science, okay? So that you will be able to work in a better way, and you will be able to go through the chapter line by line. These are the answers. Take the screenshot of answers as well, but it's suggestion, please don't see the answers before doing the questions. Thank you, class. In the next lecture, we will see the characteristics of periods and groups. Till then, keep learning, keep studying, stay healthy and stay